दिस फैन दैट यू आर सीइंग, ये जो पंखा आप देख रहे हैं ये कोई आम पंखा नहीं है. हाँ, ये घर जो आप देख रहे हैं लग रहा है कि इट्स मोर देन 100 years old. And this fan specially needs a very, very special introduction and mention. I'm told by the, fifth generation today who are owners of the house and residents here कि ये पंखा जो है कम से कम 75 साल पुराना है, उससे ज़्यादा हो सकता है. और आपको पता ही है कि वी हैव जस्ट सेलिब्रेटेड 76 years of Indian independence. So probably this fan was manufactured somewhere around the time when India was granted independence. But that is not all. जो यूनिक पार्ट ये पंखे का है, अब देखिए क्या आर्किटेक्चर है, क्या बात है. पूरा देयर इज नो साउंड, एब्सोल्युटली. मैंने कोई साउंड किल नहीं किया है, कोई फिल्टर नहीं लगाया है. और मुझे ये बताते हैं ये ओनर्स इस घर के कि ये पंखा जो 75 साल पुराना है, इट इज 75 years old, इट हैज नेवर बीन रिपेयर्ड. कैन यू बिलीव इट? यानी कि ये रिपेयर तो दूर की बात है, इसका कैपेसिटर और अंदर की जो मैकेनिक्स है वो भी चेंज नहीं किया गया है. लुक एट द विंग्स, लुक एट द मेन पोर्शन ऑफ द फैन. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द एक्सलेंस. जो ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश के समय दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड दे बिलीव्ड दैट इट इज वेल अहेड ऑफ द टाइम्स. No wonder, even after 75 years, they have left a legacy which can match, even outmatch, the technology that exists today. A great glory, a very small, humble, you can say a gift or a memorabilia of the good old British times. A vintage fan right here in an antique house at Ambur in Tamil Nadu, South India. Thanks for watching.